हम मीडिया का काम भी करते हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंचाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वही एक काम है जो सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक माध्यमों से आप समाज सेवा में और राजनीति में भी करते हैं। तो मूलभूत दोनों विषयों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही दृष्टिकोण से निकलते हैं, एक ही सोच से निकलते हैं, और दोनों का औचित्य भी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। पहले मैं एक अलग व्यवसाय चलाता था, उस व्यवसाय के अंदर मुझे जो काम मिलता था एक मीडिया संस्थापक के तौर पर, संचालक के तौर पर, मैं वो करता था। और अब जो मुझे लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति का एक रोल होता है, उनकी बात उठाना संसद के अंदर या किसी भी पटल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तब मैं वो काम करता हूँ। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आप कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आप एक ही पद पर, दोनों पद पर रहते हुए एक ही काम करते हैं। जब आप दोनों पद पे अलग अलग रहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एंड हाउ यू वांट टू, हाउ सीरियस आर यू अबाउट इट. I am a person who likes to do things very seriously, whether it's my media business or my political career. Both are extremely important. नहीं, कहीं ना कहीं मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी का बात आता है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है बिकॉज ऑफ आपका पॉलिटिकल कैरियर है, कहीं ना कहीं कन्वर्जन होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलिजन भी होता है. सो दिस इज नॉट ओनली आपके ऊपर के बात नहीं है, जनरल ट्रेंड जो देख रहे हैं. I agree. See, we are all social animals. We are not living in an island. हम अकेले नहीं रहते, हम सोसाइटी का पार्ट है. चाहे जर्नलिस्ट की बात करूं, चाहे मैं किसी लॉयर या जज की बात करूं. मैं दो उदाहरण आपको मीडिया फ्रेटर्निटी के मतलब इस पोजीशन के अतिरिक्त देता हूं. एक उदाहरण है, एज अ जर्नलिस्ट यू आर अ सीनियर एडिटर, यू हैव योर ओपिनियंस, यू हैव योर व्यूज़, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी सोच है. पर क्या आपकी आइडियोलॉजी और आपकी सोच ही आपका कंटेंट बनती है? That is where objectivity का बात आता है. Exactly my point. So when objectivity is there, it doesn't matter whether you are in a position where you are making policy as well as running a media entity. Although in my case, I am not actively running the media entity anymore. I am almost like a person who's the founder who started, but not running it hands-on anymore. My wife runs the media entity. But for someone who's been associated with the industry for so long, absolutely. आपने ITV... My first love in that sense and my first calling will always remain media, because when I came back to India, that is what I started doing. मैंने अपनी शुरुआत वापस आकर फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन करके स्क्रैच से ये मीडिया कंपनी का शुरुआत. आप ये एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है? देखिए, मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. देयर आर नंबर ऑफ रीजंस एंड अंडरलाइंग रीजंस फॉर इट. टुडे यू हैव टू नॉट सी इट इन अ वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू. ये विचित्र तरीके की प्रॉब्लम है. आपके पास सिर्फ एक माध्यम था आज से 400 साल पहले, जो अखबार था, जब मीडिया शुरू हुआ. फिर आपका रेडियो आया, फिर आपका टेलीविज़न आया, फिर आपका डिजिटल मीडिया आया, फिर आपका सोशल मीडिया आया. इस 400 साल की जर्नी के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से माध्यम बदलते रहे हैं, और उन माध्यमों से किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनका कैसे अमूलचूल परिवर्तन हुआ है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. जब हम अखबार पढ़ते हैं, वी रीड लेफ़्ट टू राइट, वी डोंट रीड राइट टू लेफ़्ट. The human brain is configured to read left to right, and you first read the headline, then you read the byline, and then you decide whether you want to read the whole article or not. Once you've read the article, then you make up your mind कि you agree with the article or not. Now, in the era of AI, artificial intelligence के अंदर, there is only content which is being thrown at you, which the AI algorithm thinks that you want to watch or read. It is robbing you of that opportunity to be able to have a difference of opinion or have an alternative opinion. Now that is a very big shift when you understand from the old media, which almost forced you to read an alternative viewpoint, to this media which is forcing you to read only your viewpoint. It's a very big shift from that. Now who's doing it? What is the reason for it? It's technology. No one's responsible for it.
But these are impacts and effects of technology that is changing how we consume content, how content impacts us, and the whole question of objectivity goes out of the window then. Because who's to decide whether that content is objective or not? That is what AI is doing, that is what machine learning is doing for you. So you have to understand that it's not as simple. Are we objective? Let me give you another example. Let's take the example of a lawyer in a judiciary. Very often people say that judges administer justice as per what the law says. And they are not affected by society, people, public, nothing. Public opinion doesn't matter to them. But that is not reality. It matters. What happens to the society and what society thinks, what their impression is, has a definitive impact on the judge while he's delivering justice. So when we say we have to be unbiased, when we say we are not affected by what is happening out there, it is absolutely incorrect. We are absolutely affected. What we must as journalists do is to ensure that our body of work is not reflective of that, as much as possible. Getting affected and going for some kind of a patronage. If you see the trend in the media in India, we see that all media houses, most of the media houses at least, they are having some kind of political patronage. ये जो political intolerance, political interference ये जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये news media को तो बहुत affect कर रहा है. You also run a business, you certainly have experienced it. I have not experienced any political interference. I come from the state of Haryana. My channel in Haryana has about 78% market share. And my father has been in politics. My father-in-law is the former speaker. His father is a 4-time MP from Karnal. My entire family is into politics from different political parties. And yet, I have 78%. Let me complete. Yet I have 78% market share is because what the content we are showing, people want to watch and they want to hear. Today, we are sitting on this platform, which is owned by my senior colleague, and you are asking me this question stands testament of the fact that there is freedom of expression and democracy in media. Now, whether that freedom of expression and democracy exists in mainstream media only, or is it also, you will subject social media, influencer media and independent media to it also. I don't see anyone asking them those questions. What is this concept of independent media? Because you decide that you are individually going to make content, you become independent media. Who has given you that title? Or who has given you the sanctity that you are the real form of media? Or the other media, mainstream media, has to be questioned? Can the bona fide of so-called independent media not be questioned? Where is the money coming from? Who is funding those? That is the question I'm also asking. See, the point is, people decide. You and I will not sit in judgment of products. People of this country, the viewers, they decide who to watch, who not to watch. क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका फैसला नहीं करेंगे. और ये आज की एडिटर्स, संपादकों की एक बहुत बड़ी कमी है. Sorry to be very blunt about it. You are entitled to your opinion. Because आज क्या हुआ है कि पहले संपादक और एडिटर्स डिसाइड करते थे कि आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या देखेंगे. वो आपका फैसला आपके लिए करते थे, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, संपादक को सब कुछ पता है. अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है. अब लोग खुद फैसला करते हैं कि उनको क्या देखना है, तो आप क्या पढ़ना है. आप क्या सोचते हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, डेमोक्रेटाइजेशन, इज इट अ बून और अ बेन? It is how you see it. Look at it. Who are we to stand in judgment of saying that it is a boon? आपको क्या लगता है? I think everything that is evolutionary is a boon. Like the human race. We all evolve. So is the medium that is evolving. तो जब मीडियम इवॉल्व होएगा तो उसकी त्रुटियां भी निकलेंगी, कमियां भी निकलेंगी, अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी भी होंगी. It depends on us what we want to take forward and what do we want to leave behind.